So a lot of people who have any kind of mental issues will have or will experience something where maybe their sleep is disrupted. Either they have become heavy sleepers, उठ ही नहीं पाते, or they have become very light sleepers, बहुत ही छोटे से रीजन के लिए उठ जाते. हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वराली पेंडसे और आज हम सबके साथ यहाँ पे बैठी है दिशा बर्वे मैम. हेलो दिशा ताई. Hello, hi, good to be here. Thanks Farali. इट इज गुड टू हैव यू हियर. Thank you. सो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज मेंटल हेल्थ. Right. Very very important these days. वेरी मच इम्पोर्टेंट. लाइक अभी हम 2025 में जी रहे हैं एंड स्टिल a lot of people they are like they don't know the importance of mental health. They still take it very granted. Like हाँ ठीक है, स्ट्रेस ही तो है, इतना Right. क्या है, Right. ऐसा होता है. तो प्लीज हम सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को और मुझे भी आप प्लीज मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस बताओ, जो कि हमारे जो व्यूअर्स है जो नहीं लेते मेंटल हेल्थ को सीरियसली, वो प्लीज आज से लेना स्टार्ट करें. Sure. So I think mental health का importance थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है because जैसे आप किसी भी गाड़ी में अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करोगे, आप उसमें रेगुलर फ्यूल नहीं भरोगे, आप उसको चेक नहीं करवाओगे ओकेजनली, साफ सफाई नहीं करोगे, सो वन डे इट्स गोइंग टू स्टॉप. करेक्ट. राइट. सो मेंटल हेल्थ उसी टाइप की चीज़ है जो आप अंदर ही अंदर, इफ़ यू आर डूइंग योर मेंटेनेंस, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इट, इट विल मेक श्योर कि आप इस तरह से स्टॉप नहीं होगे जिस तरह से हम एक ब्रेक डाउन कहते हैं. राइट. मेंटल हेल्थ इनफैक्ट एनकरेजेस स्टॉपिंग, इट एनकरेजेस टेकिंग ब्रेक्स. हाँ, एग्जैक्टली. जैसे हम कोई रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो अगर मुझे 1000 किलोमीटर्स जाना है तो आई डोंट जस्ट ड्राइव 1000 किलोमीटर्स, नो, आई टेक अ ब्रेक फॉर मी एंड फॉर माई कार. करेक्ट. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल हेल्थ को आपको संभालना होगा, आपको उसको ध्यान देना होगा, बिकॉज दैट इज द की टू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Because what is the rest of our life made of? Tell me, what is there in our life? We have people in our life. You have work in your life. कुछ तो आप करते हो, आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करते हो, you're working, आप होम मेकर हो तो आप घर संभालते हो. So many roles and labels that we are constantly working at. उसके अलावा you have your health, your physical health. It's part of your life. Correct. फिर आपके relationships में 2-3 sections होते हैं. एक है घर में, एक है let's say your social life, your colleagues, सब अलग अलग हैं. Even though we just call them people, but they are different. We treat them differently, right? So that is part of your life. Then how you live, where you live, how you travel. कोई गाड़ी से जाता है, कोई मेट्रो से जाता है, कोई लोकल से जाता है. So these are all part of your life. You agree? Correct. Okay. Now in all these, do you see that there is constant interaction between us and these sections of our life? Yes. 2 days if you don't take care of your house, what happens on day 3? It's all the mess. Yeah. 2 days if you don't give garbage outside your house, what stink will start coming? Yeah. Right? So we are constantly interacting with all these aspects of our life. Correct. In order to interact with them, where is that energy going to come from? That is where mental health resides. If your emotions are regulated, if you are able to understand how to respond to situations, how to interact with these various aspects of your life. Correct. आपकी लाइफ पिज्जा की तरह है, बहुत सारे स्लाइसेस है उसमें. राइट. तो आपको हर स्लाइस के साथ इंटरेक्ट करना है. उसके लिए आपको जो इनर फ्यूल चाहिए, आपकी गाड़ी कहीं भी जा सकती है, लेह लद्दाख पहुंच सकती है, लेकिन आपकी गाड़ी जिस तरह से चलेगी, that is what will decide whether you will reach Leh Ladakh or you will stop in Delhi only. Okay. Wow. Okay. That is where mental health plays a role, which is why उसका importance actually बात ही नहीं करना है, वो ही है. वो है तो सब है. Correct. Right? Correct. So that is how I feel mental health is, and it is becoming more and more important because the number of slices in our pizza is now increasing.
So the more number of slices you have, the more inner energy and positive mental health you need, so that you can deal with all these aspects of your life properly, efficiently, and in a regulated manner. करेक्ट करेक्ट. एक सवाल और था कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका रूट कॉज स्ट्रेस या एंजाइटी होता है, मतलब मेंटल हेल्थ होता है. सो इज इट ट्रू or is it just, you know, I don't know what it is. Okay. But I've heard this, that's why. Okay, so if I tell you to think of a lemon, सोचा? नींबू, Yeah. उसको स्क्वीज कर रहे हैं, उसमें से रस निकल रहा है, Correct. कुछ हो रहा है यहाँ पे, you're feeling the taste, Yeah. you're feeling, your body is responding to the thought. Yeah. See the connection. Your body and mind are so closely related that if your mind is not okay, your body will respond. Correct. So अगर आपकी body आपको कोई signs and symptoms उस तरह की दे रही है, where you are feeling like, okay, my body is giving me a message, please listen to that message. That message is coming from your mind. Okay, so your body is a projection and a reflection of what is happening in your mind. If you are emotionally regulated, if you are feeling contented, if you are feeling happy, happiness is a very, it's a term that is used very loosely, but here I am using it in the terms of peaceful, contented, ability to handle what life has to offer you. Okay, okay. Life ने कभी भी गारंटी नहीं दी है कि मैं सब अच्छा ही दूंगी. Correct. It will give you whatever it gives you. In fact, a very nice way to illustrate this would be a very short story which comes from some of the Buddhist parables. So it is the story of the two arrows. Okay, so the story goes that Buddha says that if one arrow comes and strikes you, will it pain you? Yeah, it will. Yes, right? If another arrow comes and strikes you, will it hurt you more? It will hurt you in some other part of your body and it will hurt more. Yeah. Right? So he says that that first arrow is what life throws at you. तो वो difficult situation, वो कुछ challenges, वो फेंकेगा आपकी तरफ. Correct. The second arrow, he says, is your reaction to that first arrow. Correct. So how you make that first arrow work for you? वो फर्स्ट एरो तक ही आपका पेन रुकेगा या आप उसको कंपाउंड करने लगोगे, फिर आप ऐसे हो जाओगे, यू विल बिकम लाइक भीष्म पितामह स्लीपिंग ऑन अ बेड ऑफ एरोज, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी विल हर्ट. करेक्ट. राइट? सो हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू रिस्पॉन्ड इज गोइंग टू बी सीन इन योर बॉडी. योर बॉडी विल रिफ्लेक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड. ओनली थिंग इज कि कभी कभी बॉडी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देगी. ओके. तो अंदर ही अंदर subconsciously you will it start will feeling start it. growing. So every time it is not necessary that, oh, I am feeling this way and my body is immediately giving me a message. Okay. But when your body gives you a message, please stop. Think, what is it telling me? Because कहीं ना कहीं आप शायद किसी chronic thought process में अटक गए हो, तो आपकी body अब eventually आपको वो message देने लग गई. Okay. So yes, to answer your question, they are deeply connected. And if you keep one healthy, the other will follow. Also, likewise, if you keep your body healthy, there is a chance that your mental health will be better. Okay. But it does not guarantee it. Oh my God. Okay. Right. Okay. There are a few common signs which you can see, bodily signs, which will tell you कि yes, your mental health is very bad right now. Like common signs, जो कुछ भी है. See, I think mental health में अगर हम symptomatically जाएं तो पहली चीज़ तो your body will show in terms of जो basic चीज़ें जो body के functions हैं. So for example, body का एक function है thought. सही है? Correct. Thought मतलब मैं decision ले सकता हूँ कि नहीं, मैं कोई choices बना सकता हूँ कि नहीं. अगर आप feel करते हैं, आप experience करते हैं कि इनमें आप consistently आपको तकलीफ हो रही है. Indecisiveness. Consistently. Okay. ठीक है. Okay. ये नहीं कि एक आध बार. Obviously, we will always have some or the other issues, but consistently अगर आप ये note करो कि I am unable to think properly. Correct. My clarity of thought is very very poor or very low. I am unable to decide between this or that.
विच इज़ वेरी एविडेंट, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है. सो थॉट वन ऑफ द बॉडीली जो फंक्शंस है, जो आपको वो बॉडी आपको उस चीज़ के लिए हेल्प करती है टू थिंक, राइट. सो थिंकिंग, ईटिंग, राइट, वी आर ईटिंग नो एवरी डे, करेक्ट, 2 times 3 times Yeah. जो भी है. सो अगर आपके फूड हैबिट्स जो आपका नॉर्मल है, आपका जो नॉर्मल है, ये रिलेटिव टर्म है. आई कांट से आर यू ईटिंग मोर, आर यू ईटिंग लेस, वॉट एवर इज नॉर्मल फॉर यू. इफ यू फाइंड दैट योर फूड हैबिट्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली, कि मैं पहले इतना खाता था, अब मैं कुछ, आई एम नॉट हंग्री ऑल द टाइम, और आई डोंट फील लाइक ईटिंग, आई ईट 1 bite एंड आई फील लाइक थ्रोइंग अप, आई डोंट Okay, फील लाइक हाँ. आई वांट टू ईट, और other way I'm eating too much, like there is, I want to eat all the time, like Yeah, I'm constantly looking for food, और I used to eat a balanced meal, अब मुझे शुगर की बहुत ज़रूरत है, या सॉल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, या फिर unless I have this I can't function. करेक्ट, कुछ लोग होते हैं कि ये चाहिए ही, नहीं तो I can't even have a decent conversation. So food is a great indicator. Next is sleep, right? So a lot of people who have any kind of mental issues Yeah. will have or will experience something where maybe their sleep is disrupted. Either they have become heavy sleepers, उठ ही नहीं पाते, or they have become very light sleepers, बहुत ही छोटे से रीज़न के लिए उठ जाना, या फिर विदाउट एनी रीज़न उठ जाना, you know, 2 बजे 3 बजे they are waking up and then they are like, okay, now what do I do? They can't go back to sleep. Or disruptions during your sleep, so too many dreams, yeah, too many nightmares. Correct. So again, disruption in sleep is a great indicator that something is going on with you. Yeah. And one more thing that can be seen by yourself and by your family and friends is withdrawal. अगर आप विड्रॉ हो रहे हैं, जो चीज़ें आप नॉर्मली एंजॉय करते थे, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, जिस फ्रेंड के साथ यू वर ओके पिकिंग अप देयर कॉल or catching up for a coffee, and now you find yourself saying no more than yes. yeah, See, occasionally it's okay to say no, okay? Correct. Again, I want to make it clear that mentally अगर आप unhealthy की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे signs and symptoms consistently होने चाहिए for you to start thinking that okay, once in a while you can sleep badly, once in a while you can overeat or undereat, once in a while you can have some decision making problems, once in a while you may not want to meet your best friend also. That's normal, that's fine. But agar consistently, and by consistently I mean at least 2 months, correct, okay? So let's assume about 6 to 8 weeks तक अगर आप feel कर रहे हैं कि I am now consistently avoiding things, consistently doing something which is not normal for me, then maybe it's time to meet Address a professional and address it. correct. So that's my upcoming question. It is people generally very much ignore all these symptoms or signs which their body is showing, their mind is showing, like they are having irrational thoughts, they are having that void because of which they can't eat, or to just fill that void they eat too much. So how can you start within yourself, how can you start self healing? So पहली चीज़ है अवेयरनेस. Correct. ओके, अगर आप अवेयर हो गए तो फिर आप सेल्फ हीलिंग या किसी टाइप के प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकते हैं. Correct. ओके, सो नाउ हाउ टू बिकम मोर अवेयर. ओके, सो लाइक आई सेड, पहली चीज़ तो ये फिजिकल सिम्टम्स Correct. जो आपने मुझे पूछे. ओके, अगर ये फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस हैज स्टार्टेड लाइटिंग अप, समथिंग इज ऑफ. ओके, सो इफ यू फील दैट समथिंग इज ऑफ, देन probably a better way to start understanding कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ या what I should be doing about this is if you find a tool to process that awareness. Okay, क्योंकि अब क्या है, बॉडी आपको अलग अलग मैसेजेस दे रही है. खाना ज़्यादा हो गया, स्लीप कम हो गई, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज रियली ट्रबलिंग मी. तो इसका प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है. तो इसके प्रोसेसिंग में थेरेप्यूटिक टूल्स जो हम व्हाट अ पर्सन कैन इजीली डू इन द कन्फाइंस ऑफ देयर ओन होम. सो यू कैन डू जर्नलिंग. जर्नलिंग इज एक्सट्रीमली यूजफुल. जर्नलिंग में आई रिकमेंड एक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग. इसका मतलब ये होता है, लॉट ऑफ पीपल जर्नलिंग, ओ गॉड आई डोंट वांट टू डू इट.
बिकॉज यू फील कि अरे दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ माई एफर्ट. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग में you simply write whatever you are thinking. Okay, don't whatever plan it might be. whatever it may be. आज मेड नहीं आई है ना, बहुत You're बार just ये हो venting out सकता है. your thoughts, your So feelings, write whatever yeah. you are thinking. Once you have written the first thought, write the next thought that shows up in your head. Just do this for 10 days, 12 days, and you will find that your clarity is walking in your own pages. Okay. Recommended time to do this is in the morning. नहीं जम रहा आप दिन में कभी भी करो. Try and stick to a same time. मतलब आज 4 बजे दोपहर को किया, कल 8 बजे सुबह किया और परसों 12 बजे रात को किया. इट्स नॉट बैड. अगर कुछ भी नहीं जम रहा है, like your profession, if you have weird timings, then please do it at the weird timings. लेकिन अगर if you are committing to it for 10 days, then try and see if you can do it at the same time. Okay. I recommend morning, but it's fine. Okay, the doing is more important. Time वगैरह, yes, it plays a role, but it's not a must. Okay. Yeah, but at least you can start it. Yes. Then so, you can like. So the processing comes into the picture. तो पहले मैं थोड़ी aware हुई, फिर मैंने उसको process किया. Process किया तो आपके वो जैसे that story, right, where muddy water was being filled. तो वो muddy water आप पी नहीं सकते. Yeah. But if you wait, the mud will settle and the top water we can drink. We can drink. Right? That is what clarity is. So when you start finding clarity in your work, so one of the things, like I said, is journaling. Another thing that a lot of people can do is coloring. Okay? Yeah, I've heard. So coloring is very good. जिन लोगों को journaling boring लगता है या वो commit नहीं कर पाते, they can try coloring. Okay, coloring is beautiful because उसमें आप creative होना वगैरह ज़रूरी नहीं है. Lot of times people say, how will I color? How will I make? Nothing. You buy a book which has already made images जो आपको पसंद आती है. Just color it. Color for about 20 minutes a day. You will find clarity improving. इसको आपको at least 15 से 20 दिन देने चाहिए. Correct. Okay, don't expect something that is troubling you for 6 months to get solved in 6 minutes. Okay, that's the other aspect of mental health. The beauty of mental health is that when your mind starts working in the right direction, it takes seconds for it to solve your problem. But till then, we have to be patient. Correct. Okay, so first you become aware, second you start processing it, third you start, then once your processing happens and little bit of clarity comes, that's when एक तो आपको शायद reason भी पता चलेगा why you are suffering, in which case if it is something that is solvable, जहाँ पे आप practical steps ले सकते हैं, तो आप ही को वो solution दिख जाएगा. Okay? अगर confusion है, you have understood but you don't know what to do, best is to seek out a therapist or a counselor or somebody professional, someone professional best. rather than क्योंकि literally आपके 1 या 2 session में भी आपका problem actually solve हो सकता है. Correct. Yes. Wow. So it does not take too long. I am going to start journaling. Please do. now. Please do. It is a brilliant habit. Yeah. Yes. And how can I face this a lot, and there are lots of my friends who face this as well. They say it is my gut feeling, but actually it is just the anxiety or it is just the anxiousness which is talking. Okay. How can you differentiate between a gut feeling and like having a thought or coming to a conclusion when you're anxious? So you have actually covered 3-4 things in this one question. Yeah. What we just spoke about. Gut कहाँ है? यहाँ पे. Yeah. You know, gut is what else is the name for the gut? It is the second brain of our body. Okay. We have 2 brains. We have 2 hearts also. I'll tell you about that some other time. Okay? Okay. But we have 2 brains. Okay? One is the brain we all recognize, and the second brain is your gut. Okay. So if your gut is telling you something, drop everything and listen. Okay? Correct. Your gut is extremely powerful. In fact, majority of your emotional storage happens in the gut. Oh my God. Okay. Okay, so आपके जो feelings of self-worth हैं, feelings of confidence है, feelings of worthiness, feelings of self-image, ये सब यहाँ हैं. Void जो आता है जब यहाँ है. Correct.
तो आप बहुत ज़्यादा लोग फील करेंगे कि when they are facing a problem, when there is something going wrong, the problem starts here. Correct. How many people you know who need to run to the toilet if they are in tension? Yeah. Yeah. Why? Because it is here. Gut feeling. Okay? Yeah. So your gut, if it is telling you something, please listen to it. अब वो एंजाइटी एक्सप्रेस कर रहा है या फियर एक्सप्रेस कर रहा है या फियर बेस्ड एंजाइटी एक्सप्रेस कर रहा है, वो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा. जब हम उसकी तरफ ध्यान देंगे तभी we can understand कि is Yes. this the anxiety or is it the real gut feeling Yes. we are having. Correct. Okay? Yeah. Anxiety typically comes because of the fear response. ठीक है? और prehistorically rather, fear was our biggest strength. Correct. Okay? Fear kept us alive. Correct. Fear has still kept us alive. Correct. Right? So fear is very helpful in small doses. Unfortunately, fear को हमने वो रोल पहले बहुत दिया और फिर उसका रोल ले लिया. You will relate, right? उसका रोल ले लिया, अब वो घूम रहा है saying मैं क्या करूं? So then it latches on to everything. So even a small thing becomes a big thing. Correct. Okay? So we have to understand that. एक बार वो spectrum आपने समझ लिया between whether it is something I should be concerned about, whether it is something I have to really fear, whether it is something that is anxiety causing. Correct. एक बार वो आपने spectrum अगर समझ लिया, you will regulate your gut feeling Correct. correctly. Correct. Yeah. Wow. Wow. दिशा ताई, आज हमने बहुत मैंने पर्सनली और हमारे सारे व्यूअर्स ने भी बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखा है आज. पर्सनली मैंने, क्योंकि मेरी फील्ड में मुझे एज एन एक्टर आई हैव टू बी वेरी मच, you know, I have to keep my mental health in check every day Because your of face is a reflection. Exactly. So yeah, thank you so much दिशा ताई, आपने बहुत सारे important और नेसेसरी चीज़ें आज बताई हैं हमें. थैंक यू सो मच. और मैं, हमारे व्यूअर्स, हमारी सारी टीम इसका यूज़ करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इन 3 चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. Sure. So yes, thank you so much. Thank you so much, ताई. Thank you, Swarali, for your insightful questions, and thank you everyone who's spent time with me and listened to this. I wish you all a fantastic time ahead. Please take care of your mental health. Thank you. Thank you.